क्या बोलना चाहते हो, बोल दो तुम लोग। सब्सक्राइब टू विश्वजीत आर्ट्स। थैंक यू। तो गाइस संडे की दोपहर में मैं निकल पड़ा हूँ घूमने, और कोई अच्छा स्पॉट मिले तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ ठहर के पेंटिंग करने की। और अभी जो आप देख रहे हैं यह है कासफूल। हमारे बंगाल में जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा, उस टाइम ये खिलता है और ये बहुत ही खास एक फूल है। तो गाइस मुझे स्पॉट बहुत पसंद आ गया है, क्योंकि यह बहुत बोर्ड्स है और मुझे बोर्ड्स ड्रॉ करना बहुत ही पसंद है, जैसे कि आपको पता है। तो मैं यही ठहर के पेंटिंग करने की सोच रहा हूँ। तो गाइस अभी मैं आउटलाइन को बना ले रहा हूँ। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं फिर से आउटडोर पेंटिंग करने आ गया हूँ, और मैं बोट्स के बीच में बैठा हुआ हूँ। और अभी करीबन 4:04 हो गए हैं, देख सकते हैं आप। तो हम निकल पड़े थे संडे को दोपहर में घूमने, और सोचा थोड़ी पेंटिंग भी कर लिया जाए, तो बैठ गए इधर, अच्छा स्केप मिला। तो अब अभी देखो पेंटिंग को और इन्जॉय करो वीडियो को। और अगर अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे नए नए वीडियोज़ पाने के लिए। तो चलो पेंटिंग को शुरू करते हैं। तो गाइस मैंने आउटलाइंस बना लिया है और अभी मैं कलर करूँगा इसको। तो वीडियो को अब एंड तक देखना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना।
तो गाइस अभी मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ और कलर्स में यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन का आर्टिस्ट वाटर कलर। तो गाइस मेरा फर्स्ट लेयर हो गया है और अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगा थोड़ी देर। तो गाइस मेरा फर्स्ट लेयर सूख चुका है और अभी मैं सेकंड लेयर पे काम करूँगा। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आउटडोर आता हूँ और वीडियोस अपलोड करने से पहले मैं फ़ोटोज़ अपलोड करता हूँ, तो आप अपडेट्स पाने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दें। तो चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। अभी मैं बोट्स में डीजल ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं पानी में रिफ्लेक्शंस बना रहा हूँ बोट की और पानी की वेव्स भी बना रहा हूँ। तो गाइस मेरा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे एक सिग्नेचर कर रहा हूँ। मैं रेड कलर से सिग्नेचर कर रहा हूँ।
और गाइस मेरा पेंटिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा बना। कमेंट में ज़रूर बताना पेंटिंग कैसा बना, और इसे आप अपने दोस्तों को और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो। I'm lost without you.